और भी कई सारे देशों की रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर के 196 देशों में से मात्र 3 देश ही ऐसे हैं जिन्होंने चांद की सतह पर सही सलामत सॉफ्ट लैंडिंग की है। वह 3 देश हैं चाइना, अमेरिका और रशिया। अगर भारत चंद्रयान 3 मिशन के जरिए चांद पर सॉफ्ट लैंड करने में सफल हो जाता है तो यह एक स्पेस पावर कंट्री कंसीडर किया जाने लगेगा, क्योंकि यह चौथा ऐसा देश होगा जिसने इस कठिन मिशन को सक्सेसफुली कर लिया होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रयान 2 मिशन के लॉन्च होने के कुछ ही महीने पहले इजराइल ने भी चांद पर सॉफ्ट लैंड करने की कोशिश की थी। उनका मिशन ऑलमोस्ट 99% सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन चांद की सतह पर लैंड करने से मात्र 5 मिनट को जापान की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी ने चांद पर हकुतो आर नाम के एक लैंडर को भेजा था। इसका भी मात्र एक ही मिशन था और वो था चांद पर सही सलामत सॉफ्ट लैंडिंग करना। बिल्कुल भारत के चंद्रयान 2 मिशन की तरह ही ये भी मिशन एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से फेल हो जाता है और जापान चांद पर सॉफ्ट लैंड करने वाला चौथा देश बनने से चूक जाता है। इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना हर देश के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। चांद हमारी पृथ्वी से मात्र 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जो इस ब्रह्मांड की बड़ी डिस्टेंसेस के सामने कुछ भी नहीं है। यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट भेजने में कम समय और कम पैसे लगते हैं और इसीलिए वैज्ञानिक चांद को एक प्रैक्टिस ग्राउंड समझते हैं। अगर कोई भी स्पेस एजेंसी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना सीख जाती है तो उसके लिए बाकी ग्रहों पर जाना और वहां पर स्पेसक्राफ्ट्स को सॉफ्ट लैंड कराना बच्चों का खेल हो जाएगा। वैज्ञानिक खुद ये कहते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग करना टेक्निकल चीज नहीं बल्कि एक आर्टिस्टिक चीज है, यानी ये भी एक कला है जिसे प्रैक्टिस के साथ मास्टर किया जा सकता है। आज नासा इतने सारे सॉफ्ट लैंडिंग मिशंस को इतनी आसानी से इसलिए कर लेता है क्योंकि वहाँ के वैज्ञानिकों को ऐसा करने का लंबा तजुर्बा है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नासा सॉफ्ट लैंडिंग करने में कभी भी फेल नहीं हुआ है, लेकिन फेल होने के बावजूद उन्होंने असफलताओं से सीखते सीखते फाइनली सॉफ्ट लैंडिंग की आर्ट को मास्टर कर लिया है। जहां नॉर्मल स्पेस एजेंसी थ्रस्टर्स के जरिए सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करती हैं, वहीं नासा के वैज्ञानिक पैराशूट के जरिए भी सॉफ्ट लैंडिंग करना सीख गए हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर चल रही वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे नासा का या मार्शियन स्पेसक्राफ्ट के जरिए उसकी सतह पर लैंड कर रहा है। लेकिन यहाँ तक जाने के लिए हमें सबसे पहले थ्रस्टर्स के जरिए ही सॉफ्ट लैंडिंग की कला को मास्टर करना पड़ेगा। सॉफ्ट लैंडिंग का एकमात्र मकसद होता है स्पेसक्राफ्ट को बिना झटके के आराम से सतह पर उतारना। इसके लिए लैंड करने से थोड़े समय पहले स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को कंट्रोल्ड तरीके से कम करना पड़ता है। Hey, are you someone who faces problems in remembering Excel formulas? What if I tell you that from today onwards you और यही वह हिस्सा है जो सॉफ्ट लैंडिंग को इतना ज्यादा कठिन बना देता है। चंद्रयान 3 में थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करके इसकी रफ्तार को कम किया जाएगा। दरअसल जैसे ही कोई स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर लैंड होने वाला होता है तो यह थ्रस्टर्स एक अपोजिट फोर्स को क्रिएट करते हैं। इसी अपोजिट फोर्स की वजह से स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार कम हो जाती है और वह सही सलामत सतह पर लैंड हो जाता है। आपने कभी ना कभी रॉकेट लॉन्च होने का वीडियो तो देखा ही होगा, उसमें भी थ्रस्टर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। यह स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल को इस्तेमाल करके थ्रस्ट यानी अपोजिट फोर्स को क्रिएट करते हैं। यही फोर्स जब जमीन पर लगता है तो जमीन खुद ब खुद रॉकेट को ऊपर की तरफ धक्का देती है और रॉकेट को लॉन्च होने में आसानी होती है। यह सब कुछ न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है, जो ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। I'm the guy who jumped from space. I wanted to be the first human outside of an aircraft breaking the sound barrier. I wish to see all I can see. I almost weigh twice the weight that I normally have, and it's very difficult to do a perfect exit. Do not over-rotate, because if I start over-rotating, there's no air that you can use to slow down. Okay, Joe, I'm ready. Okay, here we go, Felix. I'm going over. Jump away.
be the first human outside of an aircraft breaking the sound barrier. First 25 Because seconds, of it looked like everything is under control. And after 34 seconds, I hit Mach 1 and I broke the speed of sound. Was that him breaking the... Yeah. That was our goal. I wanted to be the first human outside of an aircraft breaking the sound barrier. Because of the fact that a lot of those scientists said prior to the jump, you're gonna spin like crazy, and the other half said, we don't think anything is gonna happen. I was mentally prepared to spin, but I was hoping that I'm not gonna spin. Now, if you watch the next couple of seconds, you see at that moment, it slowly starts to spin. It's getting faster. The problem is there's no protocol. There's nobody in the world telling you, listen, Felix, if this happens, you have to do this while the whole world is watching. Then I was trying to move my arms around a little bit, just maybe it does something. And then it stopped for a second, but now it starts getting the opposite direction, you know, and then it really ramps up. At that moment, it's not about breaking records anymore. At that moment, it's all about survival. Speed 600 miles per hour. There's only one way for the blood to leave your skull, and that's through all the eyeballs. If that happens, you're gonna die. Speed 700. I had a G-Whiz attached to my hand. The G-Whiz is a device that it fires a drogue chute that pulls you out of that flat spin. That's why I put my hands in to trick that G-Whiz. It's less G, and now the G-Whiz senses, oh, less. हाँ वो कहता फ्लैग, वो फ्लैग नहीं है, फ्लैग के पास हो। गाइस वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं श्रीहरिकोटा लॉन्च देखने। कल मैंने इसरो के लिए ट्वीट किया था, आप थोड़ा सा रीट्वीट करो कि मुझे टिकट नहीं मिल पा रही जाने देखने की, बट मेरा बहुत मन है चंद्रयान 2 देखने का। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के साथ में जा पा रहा हूँ। बजे यहाँ पे 11 लॉन्च है, 2:43 का 40 मिनट का, 3.5 आवर्स टू लॉन्च। मैं आया हूँ, मेरे साथ डैड आया। सो हमने इस बार की है रेव कार। यूजुअली मैं जो है जूम कार यूज़ करता था। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं NH16 पे। 12:15 हो चुका है, तकरीबन 2 घंटा और 20 मिनट बचे हैं लॉन्च को। पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा फंस गया था बिकॉज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमें देर लग गई। अभी हमने हाईवे अभी पकड़ा है, कट टू कट ही पहुंचेंगे। सुबह हमारी फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई और गाड़ी वाले में थोड़ा डिले कर दिया। सारे काम कट टू कट होते हैं, सारे काम। मेरी प्लानिंग वैसे ठीक थी क्योंकि एक तो सुबह की फ्लाइट मेरी मिस हो गई और फिर ये वाली फ्लाइट पकड़ी। अब एकदम कट टू कट चल रहा है, बट ऐसा ना हो जाए बस कि वहाँ पहुँच के फिर TV पे देखना पड़े। लोग श्रीहरिकोटा
में। और ये जो आपका रोवर है उसको एक स्लैंट हाइट पे दिखाया गया है और हमारे वैज्ञानिक उन सबका समाकलन करके तैयारी कर रहे हैं। इस समय पूरा प्रक्षेपण यान तैयार हो गया है, प्रक्षेपण उपग्रह तैयार हो गया है और इसको अब रॉकेट के साथ में समाकलित कर रहे हैं। और ये समाकलन होने के बाद में ऊष्मा कवच यानी हीट शील्ड से इसको बंद किया जा रहा है। इस पूरी असेंबली को हम इनकैप्सुलेटेड असेंबली या समाकलित कर देते हैं और ये एक सैटेलाइट प्रिपरेशन हॉल में किया जाता है। इस समय उसको हम टेलर के द्वारा लॉन्च करने के लिए एक असेंबली हॉल में लेके जा रहे हैं, जहां की पहले ही 1 टन तक का रॉकेट तैयार है। इस समय इनकैप्स असेंबली को रॉकेट के ऊपर समाकलन के लिए उतारा जा रहा है। इस समय आप देख रहे हैं कि पूरा रॉकेट तैयार हो गया है और इसको करीब 1 किलोमीटर दूर पटरियों के द्वारा असेंबली हॉल या समाकलन कक्ष से लॉन्च पैड की ओर ले जा रहे हैं। इसको ले जाने के लिए कम से कम लगभग 2 घंटे का समय लगता है और इसकी जो गति है वो 7 से 8 मीटर पर मिनट रहती है। इस समय तक ये रॉकेट अपने लॉन्च पैड पर पहुंच गया है और इसमें और बाकी के जो काम करने हैं उनके लिए ये फोल्डिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। Welcome to the live feed back to the mission control, where you can see the experts again intently monitoring the launch. And on your screens now is the Shri M. Vanita, the mission director for Chandrayaan 2 spacecraft, assisted by her colleagues, senior colleagues. And today is a historic launch of Chandrayaan 2 into a GTO Earth parking orbit, from where it will be propelled to moon later. The Chandrayaan 2 consists of an orbiter around moon, a moon lander named Vikram, and a moon rover called Pragyan, which will come out of the lander after its soft landing on moon. The moon landing will be in early hours of 7th September, which is 48th day from today, and I will share with you the mission plan little later. The 20-hour final countdown for the GSLV Mark 3 M1 mission commenced yesterday at 18:43:12 a.m. IST. The countdown was initiated following the clearance by Mission Readiness and the Launch Authorization Board. On your screen is the Vehicle Range Operations Director. VVIP is on your screen. Shri Sadhguru, flanked by Shri P.S. Goel, Distinguished Professor of ISRO. Again on your screen, the launch vehicle Mark 3. इस समय शार केंद्र के असिस्टेंट डायरेक्टर साहब को आप दिख रहे हैं। उनके साथ में ये हमारे इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के शिवन साहब हैं। उनके साथ में STS शार सेंटर के डायरेक्टर साहब थे। ये एक विहंगम दृश्य है जहां से कि लॉन्च कंट्रोल सेंटर, जहां पे व्हीकल को कंट्रोल कर रहते हैं, वहां के वैज्ञानिक और उनको देखने के लिए उनके और बहुत सारे वैज्ञानिक मौजूद हैं इस समय। ये हमारे सैटेलाइट केंद्र URSA के डायरेक्टर साहब, उनके साथ में और विभिन्न केंद्रों के डायरेक्टर्स या निदेशक लोग बैठे हुए हैं। इस पूरी रो में जो भी लॉन्च ऑथराइजेशन बोर्ड के मेंबर्स होते हैं उनके लिए ये रो अलॉट की जाती है। इस समय हमारे पूर्व चेयरमैन श्री केरन साहब और श्री राधाकृष्ण साहब विराजमान हैं। Mission computers transmitting initial values. The countdown has started at 18:43 a.m. IST yesterday, and this was authorized after reviewing the readiness of the vehicle, satellite, ground stations, and other range support systems. Confirms data from about 21 minutes 45 seconds into the launch. Before the launch, T-minus 21 minutes and 41 seconds now, and I want to brief to you about an important event which will going to take place shortly. That is the authorization of the launch by the mission director. Now, taking T as the liftoff time, at T-minus 19 minutes 30 seconds, the mission directors will start getting readiness of vehicle, satellite, range, and TTC operations. He will then authorize to the vehicle director
at T minus 18 minutes 45 seconds to proceed with the launch. Again, this authorization is based on all the input readiness from various subsystem directors. Immediately, the vehicle director and the cryo chief will authorize the initiation of the vehicle operation sequence. At T minus 16 minutes, the vehicle director authorizes the automatic launch sequence controller to start the automatic launch sequence, the ALS. The ALS is then initiated at T minus 14 minutes 30 seconds. I repeat, T minus 14 minutes 30 seconds. From this event onwards, the checkout of all the vehicle and satellite-related activities are taken care by the onboard computer system deciding on the launch vehicle. We are T minus 20 minutes 25 seconds into the launch, and within a minute or so, the mission director will authorize the launch. इस समय आपके व्यू पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये मिशन कंट्रोल का है, जहाँ के हमारे प्रोग्रामर जो कि आपको Control to note event 407 all RMSs देते रहते हैं और सारे इंजीनियर इसी रो में बैठे हुए हैं। ये मिशन कंट्रोल केंद्र की सबसे आगे की पंक्ति है। उसके पीछे ये हमारे केंद्र के 4 केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर्स और उनके पीछे रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर। आपको समय समय ये जो विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, ये इंजीनियर जो हमारा लिक्विड या द्रव नोदन रॉकेट L-110 है, उसके US-25 और N-24 को भरने के लिए इसी कंसोल से काम किया जाता है। और ये एक और दृश्य मिशन कंट्रोल का है, जहाँ पे हमारे साइंटिफिक सेक्रेटरी साहब हैं और ये दीक्षक दीर्घा, जहाँ पर बहुत सारे गणमान्य मौजूद हैं जो कि इस लॉन्च को देखने के लिए बहुत से हमारे विभिन्न केंद्रों से आए हुए हैं। Chandrayaan 2 spacecraft launch pad initialization completed. Spacecraft health is normal. Now you can see the announcements being made. The feedback being given to the mission Range director Operations Director, Mission Director. Range systems are ready for GSLV Mark 3 M1 Chandrayaan 2 mission. Roger. TTC Director to Mission Director. TTC we are getting the inputs one by one, and shortly you will be seeing the Mission Director authorizing the launch to the Vehicle Director. Intent scenes inside the MCC, a long shot of the GSLV Mark 3 M1 standing on the second launch pad. Spacecraft systems, range systems, TTC network systems. The Mission Director now. Launch Authorization Board. Mission Director authorizes Vehicle Director to proceed with the launch operation sequence for GSLV Mark 3 M1 Chandrayaan 2 mission. Just now, the Mission Director has authorized the launch to the Vehicle Director. Now the Vehicle Director, on the inputs from Cryo Chief, will proceed with further operations. All stations to note, Mission Director has given authorization for launch. PLO operations commenced for all systems, all cryo systems. Minus 18 minutes. So we are at T minus 18 minutes, and as I said, that around T minus 16 minutes, the Vehicle Director will authorize the mission launch, the automated launch sequence. In the meantime, I want to tell you that today is the 4th flight of GSLV Mark 3. Stations to note, gas system PLO operations are commenced. And 2 full developmental flights of named GSLV Mark 3 D1 and Mark 3 D2. This is also the 73rd launch mission from Sriharikota. मैं इसी बीच में आपको याद दिलाना चाहूँगा कि हमारा प्रथम चंद्र अभियान जो कि PSLV C11 XL से 22 अक्टूबर 2008 को प्रक्षेपित किया गया था। इस अभियान से हमने विश्व को चंद्रमा की सतह पर पानी के अवयवों के विद्यमान होने के संकेत दिए हैं। अब इस समय आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर में करीब 17 मिनट हुए हैं। अब आपको मैं एक फिल्म दिखाता हूँ। Now we are going to show to you Timing to control, timing in external hold mode. ISRO.
India's heaviest launch vehicle GSLV Mark III will launch the prestigious Chandrayaan 2. Chandrayaan 2 is the next leap in technology. Extremely complex, and we will experience approximately 15 minutes of terror. After the grand success of India's first successful mission to moon, Chandrayaan 1, India's Chandrayaan 2 is all set to be launched by ISRO in July 2019 using GSLV Mark III M1 launch vehicle. This three-stage rocket is the heaviest vehicle built by ISRO and has been selected for India's prestigious moon mission due to its reliability, versatility and payload carrying capability of 4,000 kg. Weighing around 3,850 kilograms, Chandrayaan 2 has three modules: the orbiter, the lander named Vikram, and the rover named Pragyan. Once in lunar orbit, Chandrayaan will deploy Vikram, which will make precise, safe and soft landing on the moon by September 2009. 170 बाई 36,500 किलोमीटर की इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में 21 डिग्री के झुकाव के साथ अंतक्षेपित किया जाना। दूसरा, पृथ्वी की कक्षा को छोड़ चंद्रमा की कक्षा में जाना। तीसरा, चंद्रमा की सतह पर लैंडर का सुरक्षित लैंड करना। और अंत में रोवर का चंद्रमा की सतह पर विचरण करके तात्विक तथा रासायनिक विश्लेषण कर वैज्ञानिक आंकड़े जुटाना। On your TV screen, Honorable Minister of State for Science and Technology and Prime Minister's Office, Dr. Jitendra Singh. जी हाँ, आज के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। We are about 31 minutes from the scheduled launch time. You're watching this live from the Mission Control Center. Apart from Doordarshan, you can also watch the launch event on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. आपको ज्ञात हो, चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C-11 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और 8 नवंबर 2008 को वह चंद्रमा की कक्षा में जाने में सफल रहा था और अपने मिशन का उद्देश्य पूरा किया, जिसमें चंद्रमा पर पानी की खोज भी शामिल है। फिर 29 अगस्त 2009 में चंद्रयान 1 से हमारा संपर्क किसी कारणवश टूट गया, लेकिन इसमें मील के पत्थर ने चंद्रयान 2 का मार्ग प्रशस्त किया था। चंद्रयान 2, जिसमें ऑर्बिटर के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए लैंडर और आसपास के क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए रोवर की अभिकल्पना की गई थी। चंद्रयान 2 को जुलाई 2019 को भेजा गया था। इसमें ऑर्बिटर ने भली भांति अपना मिशन पूरा किया, लेकिन लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरने में असफल रहा था। इसके पश्चात गहन अध्ययन और उन्नत तकनीक से परिपूर्ण सभी परीक्षणों और सिमुलेशन के पश्चात तैयार है सुदृढ़ चंद्रयान 3। आपको संक्षिप्त में LVM-3 M4 प्रमोचक यान की जानकारी देते हैं। LVM-3 प्रमोचक यान अन्य सभी यानों की तुलना में सबसे अधिक विकसित तथा उन्नत अभिकल्पित किया गया है। इसकी ऊंचाई 43.5 मीटर तथा व्यास 4 मीटर का होता है। इसका कुल उत्थापन भार 640 टन का होता है। यह 3 चरणीय यान है, जिसकी क्षमता 4 टन के नितभार को भूतुल्यकाली अंतरण कक्षा में यानी 180 बाई 36,000 किलोमीटर में ले जाने की क्षमता है तथा 8 टन के नितभार को निम्न कक्षा में स्थापित करने की क्षमता है। इस यान में प्रथम चरण में 2 S-200 स्टेप-ऑन बूस्टर्स लगे होते हैं, जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण हैं, जिन्हें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उन्नत और परिपक्व उत्पादन प्रणाली द्वारा निर्मित किया जाता है।
दोनों S200 के मध्य में L110 चरण है जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है और इसके ऊपर की ओर 28 टन के क्रायोजेनिक ईंधन वाले C20 इंजन का प्रयोग करते हुए C25 चरण है जो कि भारत का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन है। इसे इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर IPRC द्वारा विकसित किया गया है। As we await the launch, let me tell the viewers about the flight events for LVM-3 M4 Chandrayaan 3 mission. At T0, the twin S200s will be ignited and the mighty LVM-3 rocket lifts off. The core L110 stage is airlit 108 seconds into the flight, while the rocket is at an altitude of 45 kilometers. The S200 strap-ons and L110 will thrust together for the next 20 seconds. Thereafter, the strap-ons will separate at 127 seconds past launch time, while the rocket is at 62 kilometers altitude. The relative velocity gained by the rocket in the meantime is 1.59 kilometers per second. At an altitude of 71 kilometers, closed-loop guidance is initiated for LVM-3. Separation of payload fairing takes place at 195 seconds past the launch at an altitude of 115 kilometers. The core 110 stage, having completed its burn time of about 200 seconds, is separated from the ongoing rocket. This event takes place at 306 seconds into the flight. At this point of time, the altitude will be 175 kilometers and the rocket would have acquired 4.2 kilometers per second relative velocity. Then the upper cryogenic stage C25 ignites 2 seconds later and continues to burn for close to 650 seconds. During the operational regime of C25, the largest relative velocity addition takes place. It increases from 4.178 kilometers per second to 9.804 kilometers per second. And the most awaited moment of the Chandrayaan 3 separation is scheduled to take place at 969.7 seconds into the flight. The altitude will be 179.3 kilometers, which is a part of elliptical transfer orbit of 170 by 36,500 kilometers. From then on, the moon craft Chandrayaan 3 would commence its journey to the moon. इस मिशन का काउंटडाउन 25.5 घंटे पूर्व शुरू हो चुका है और इस दौरान रॉकेट तथा अंतरिक्ष यान को पावर ऑन कर सभी तंत्रों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इस दौरान L110 चरण तथा क्रायोजेनिक चरण पर ईंधन का भराव सुनिश्चित किया जा चुका है। यह काम प्रमोशन मंच से सुदूर स्थल पर पूर्ण स्वचालित तकनीक से पूर्ण सुरक्षा के साथ संपूर्ण किया जाता है। आप अभी अपनी स्क्रीन पर यहाँ व्यूअर्स गैलरी का दृश्य देख रहे हैं। बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं इस रोमांचक दृश्य को देखने के लिए। मौसम विभाग के अनुसार मौसम पूरी तरह सामान्य अनुकूल है इस प्रमोशन के लिए। अब आपके सामने प्रस्तुत है LVM-3 का इंटीग्रेशन वीडियो। We bring to you a small clipping of the integration video for the LVM-3 rocket. Minus 25 minutes. On your TV screens, you are watching the visuals from second vehicle assembly building where the full LVM-3 M4 rocket has been assembled. These are the strap-on boosters getting assembled segment by segment. Roger. Each S200 has got 3 segments Roger. called nozzle end segment, middle segment and head end segment, to which the nozzle is assembled, and one after the other the segments are joined together.
When the fully assembled solid rocket booster is handled carefully with a crane and being lowered on to the mobile launch pedestal as an integrated rocket, the igniter assembly then takes place, and this is the strap-on nose cones. On your TV screens, it is the core L110 stage being brought to the second vehicle assembly building for tilting and assembly between the S200 boosters. जी हाँ, अभी आपने देखा दोनों S200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स के साथ L110 को भी संलग्न कर दिया गया है और यह है क्रायोजेनिक अपर स्टेज, CH-25 कहा जाता है इसे। बहुत ही जटिल इंजन है ये C-20 इंजन। बहुत ही सावधानी पूर्वक पूरी दक्षता के साथ यह कार्य संपन्न किया जाता है। यह है इक्विपमेंट बे, जो कि दिमाग है इस रॉकेट का, और यह है हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल, चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये। चंद्रयान 2 के पश्चात इसमें काफी सुधार किए गए हैं। 758 वॉट के सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, 440 न्यूटन के थ्रस्टर्स हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं लैंडर और रोवर को। ये रोवर है जो चंद्रमा में विचरण करेगा। पूरी सावधानी के साथ इसे संयोजित कर दिया जाता है और यह लैंडर मॉड्यूल रोवर के साथ अब इस लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ संयोजित कर दिया जा रहा है। -22 minutes. Request all stations change over to channel 2 at T-21 minutes. No confirmation सभी is परीक्षण needed to control. पूर्ण होने के पश्चात MCC confirms data from chain 2. इस समुच्चय को RSV confirms data from chain 2. पेलोड फेयरिंग के अंदर सुरक्षित कर दिया जा रहा है। पेलोड एडेप्टर, अंतरिक्ष यान और पेलोड फेयरिंग, इन सभी के समुच्चय को एनकैप्सुलेटेड असेंबली कहते हैं। अब इसे व्हीकल असेंबली बिल्डिंग लाया जा रहा है और क्रेन की मदद से इसे क्रायो स्टेज के ऊपर संयोजित किया जा रहा है। अब पूर्णतः तैयार LVM-3M4 रॉकेट व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से निकलकर लॉन्च पैड की ओर जा रहा है। इसे मोबाइल लॉन्च पेडेस्टल पर रखकर करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। Change over to channel 2. Roger. RSO to ROD, range safety systems are ready. ROD Roger. अब इसे सावधानी पूर्वक लॉन्च पैड ले आया गया है और बाकी की स्वास्थ्य जांच यहां से पूरी की जाएगी। पूर्ण संयोजित और तैयार LVM-3M4 रॉकेट आगे की जांच तथा तरल नोदक का भराव यहां संपन्न किया जाता है। The LVM-3M4 rocket standing majestically against a picturesque background in the second launch pad. LVM-3 rocket will fly for the 7th launch today. 43.5 meters tall and 642 tons heavy launch vehicle has been operationalized after an experimental and 2 developmental missions. Mission executives on your screen, that's the spacecraft director Control to note event number 430 and associate spacecraft director. LVM-3 is India's largest and heaviest launch vehicle, ferrying Indian and international customer satellites. Vehicle Director to Mission Director. LVM-3M4 launch vehicle is ready for the Chandrayaan 3 mission.
Mission Director Roger. Mission Director to अब हम उड़ान से 19 मिनट 12 सेकंड की दूरी पर health is normal and cleared for launch. Mission Director Roger. ROD to Mission Director. Range is ready for LVM-3 M4 Chandrayaan 3 launch. Minus 19 minutes. Mission Director Roger. TTC Director to Mission Director. All track stations and network is ready to support LVM-3 M4 Chandrayaan 3 mission. रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर, टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड डायरेक्टर, सैटेलाइट डायरेक्टर और व्हीकल डायरेक्टर अपने तंत्रों की जानकारी मिशन डायरेक्टर को देते हैं. All necessary clearances are obtained for the launch of LVM-3 M4 Chandrayaan 3 mission. Mission Readiness Review Committee and Launch Authorization Board have already given authorization for the launch of LVM-3 M4 Chandrayaan 3 mission. Based on the readiness of vehicle systems, range, spacecraft and TTC confirmed by respective mission executives and the prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes for the launch operation sequence of launch of LVM-3 M4 Chandrayaan 3 mission at 14 hours 35 minutes 17 seconds Indian Standard Time today, the 14th July 2023 from second launch pad of SDSC Shar. Control Roger. All stations to know. Mission Director has given authorization for launch. जी हाँ, अभी आपने घोषणा सुनी. मिशन डायरेक्टर ने इस लॉन्च के लिए ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का अनुमोदन दे दिया है. इसके पश्चात व्हीकल डायरेक्टर एलएस ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करेंगे. On your screens, you have just watched Mission Director Shri Mohan Kumar giving clearance for the initiation of automatic launch sequence. This is based on the confirmation of readiness of all participating team for range, launch vehicles, spacecraft and tracking. The automatic launch sequence is scheduled to begin at T-minus 14 minutes 30 seconds, as a part of which the most critical control system elements are checked for the launch vehicle. Minus 17 minutes. Very close to the launch time, control will be passed on to the onboard computers. VLCC to LCC to note. व्यूअर्स गैलरी दर्शकों से खचाखच भरी हुई. VLCC Roger. बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं. आप सभी का हार्दिक स्वागत है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में. Enthusiastic viewers from all across the country gathering at Satish Dhawan Space Center Launch View Gallery for witnessing this historic moment of Chandrayaan 3 launch. Copied. The countdown for LVM-3 M4 Chandrayaan 3 mission has lasted for 25.5 hours. It was commenced on 1:30 p.m. yesterday. While of operation of hydrogen tank. During countdown, the launch vehicle stages are serviced with propellants. Gas bottles meant for stage operations are charged. While the Earth storable propellant filling was concluded more than 16 hours ago, the cryogenic propellant SDA servers activated. MC confirms data from Sharvan. अभी कंफर्म किया गया है. व्हीकल डायरेक्टर श्री बीजूसी थॉमस ने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर दिया है. अब यह लॉन्च व्हीकल LVM-3 M4 रॉकेट ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस के अंतर्गत है. इसका मतलब ऑनबोर्ड कंप्यूटर पूरी तरह स्वचालित हो चुका है. we are very close to the launch, and the day of launch wind biasing data is fed during the countdown to the onboard computers to enable most suitable steering of the launch vehicle through atmosphere. Up next, we will watch a curtain raiser video on this mission. Number 465 request CGSS to confirm supply of GN2 to cryo. Moon. This familiar object in the night sky has inspired the imagination of astronomers and ordinary people alike. From time immemorial, humans have marveled at the beauty of the moon, used it to count time and navigate the high seas.
In modern times, Moon, the only natural satellite of the Earth, has acquired added importance due to the belief that Moon is the key to our understanding of the evolution of the solar system in general and Earth in particular. Besides, Moon's precious resources and low gravity have further endeared it to humans. India, a major spacefaring nation, has conducted a detailed exploration of the Moon through its Chandrayaan program. The country has sent 2 robotic spacecraft to orbit the Moon and to take a repeated look at its surface. Chandrayaan 1 demonstrated India's ability to reach the surface of the Moon at a place and time of its choice. And with it, India became the 4th country to reach the surface of the Moon in November 2008. Besides, Chandrayaan 1's conclusive discovery of water on the Moon in 2009 was praised as a path-breaking discovery. The follow-on mission, Chandrayaan 2, had an orbiter, a lander called Vikram, and a rover named Pragyan. In the past 4 years, the orbiter has repeatedly observed the lunar surface and even today is working satisfactorily. Now, 3,900 kilograms, Chandrayaan 3 spacecraft is being sent to the Moon with the objective of making yet another focused attempt to slowly land on the lunar surface and to explore it with the help of a rover. Following the spacecraft launched by India's most capable rocket, LVM-3, the Chandrayaan 3 lander carrying a rover within it will be carried into an orbit around the Moon by the propulsion module. A little later, the lander will separate from that module and will attempt to make a soft landing in the south polar region of the Moon. This region is of intense interest as it has many permanently shadowed craters which could contain water ice and precious minerals. Chandrayaan 3 lander has 4 scientific instruments or payloads, of which one will study the moonquakes, while the other one studies as to how the surface of the Moon allows heat to flow through it. The third one will study the plasma environment near the Moon's surface. And the fourth instrument will enable scientists to measure the distance between the Earth and Moon very accurately. The 2 instruments on the rover help us study the composition of the Moon's surface using X-rays and laser respectively. While the lander and rover will be in direct contact with each other. The propulsion module circling the Moon will observe the light coming from Earth, the only planet which we know which is definitely teeming with life. This observation will help in understanding the nature of distant planets circling stars other than the Sun. As Chandrayaan 3 undergoes important tests and gears up for launch, thousands of ISRO scientists, including those who will launch it, control it, and receive the precious scientific information from it using giant dish antennas, are readying themselves for the challenging tasks ahead. In the past, their dedication and skill have enabled India to earn praise from across the world and made it proud. Let us wish them well in this great endeavor called Chandrayaan 3. आपके सामने हैं इसरो के अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ। अभी अभी आपने देखा एक संक्षिप्त वीडियो जिसमें एनिमेशन की मदद से इस पूरे मिशन की यात्रा को बताया गया है, इस मिशन के ऑब्जेक्टिव को समझाया गया। Chandrayaan 3 has 2 predecessors with destination Moon as their mission objective.
Chandrayaan 1, launched by PSLV C-11 in October 2008, included lunar orbiter and impactor. During the mission life of around 10 months, Chandrayaan 1 had mapped the minerals on lunar surface, acquired 70,000 images to help create 3D atlas of moon, and what's more, spectrometers, synthetic aperture radar and cameras. चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह में उतरने के इस मिशन को कुल 10 चरणों में पूरा किया जाएगा। संक्षेप में यह इस प्रकार है। सर्वप्रथम चंद्रयान 3 को LBM-3 प्रमोचक रॉकेट द्वारा पृथ्वी की एलिप्टिकल टारगेट ऑर्बिट, जो कि 170 बाई 36,500 किलोमीटर की ऑर्बिट है, उसमें प्रमोचित किया जाएगा। वहां से चंद्रयान में मैन्यूवर कर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की सहायता से चंद्रयान की गति को वृद्धि की जाएगी। फिर चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में जाएगा। चंद्रमा की कक्षा में जाते ही उसमें फिर से मैन्यूवर कर चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा। फिर सही समय आने पर लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से पृथक कर दिया जाएगा। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य है लैंडर तथा रोवर को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में, जो कि 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा होगी, उसमें उचित अभिवृत्ति में लैंडर मॉड्यूल को अपने से पृथक कर चंद्रमा की सतह पर भेजना है। ऐसा करने के लिए इसमें MMH और मॉन का प्रयोग कर 440 न्यूटन के थ्रस्टर्स वाले इंजन्स लगे हुए हैं। इसमें आवश्यक संचार सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। Speaking about the major milestones in the journey of Chandrayaan 3 to the moon, the spacecraft consists of propulsion module, lander and rover. Lander is planned to touch down at south pole of moon. The major 10 phases of the mission are: the first phase, called the Earth-centric phase, comprises of pre-launch, launch, ascent and earthbound maneuver. While the second phase is the lunar transfer phase, as the name suggests, the Chandrayaan spacecraft moves closer to the moon. Next 8 phases are in the moon orbit. The third being the lunar orbit insertion, followed by the moon-bound maneuvers phase, which mark the fourth phase. And next it is now that the propulsion module separates from the lunar module when 100 by 100 circular orbit of the moon is achieved. The Chandrayaan 3 in its sixth phase carries out D-boost from 100 kilometers to 100 by 30 kilometers orbit, followed by the pre-landing phase as seventh phase, and then the most awaited landing phase takes place. आपके सामने है मिशन नियंत्रण कक्ष का दृश्य। सभी सेंटर डायरेक्टर्स अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस किस तरह पूरा हो रहा है। दर्शक दीर्घा भी इस इंतज़ार पे। प्रमोशन से हम 5 मिनट की दूरी पर हैं। -5 minutes. Most of you might recall the Chandrayaan 2 mission and the intense moments when all the enthusiastic Indians were waiting for the touchdown of the lander on the surface of moon. The launch view gallery with the overwhelming crowd of visitors. पूरे दर्शक दीर्घा यहाँ बहुत उत्साहित। मौसम में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन सब अपनी सुविधाओं के साथ में यहाँ उपस्थित हुए हैं। We are close to 4 minutes from the scheduled launch time. -4 minutes.
Gaining from the heritage of Chandrayaan 2, the Chandrayaan 3 is upgraded in several aspects for the enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. Onboard computer in flight mode. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। इस दौरान सभी संचार तंत्रों की स्वास्थ्य जांच, बैटरी आवेशन पूर्ण किया जा चुका है। कुछ अंतिम गतिविधियां जैसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर रियल टाइम प्रोग्राम लोड करना, पायरो लाइन को आर्म मोड में लाना, गैस टैंक का अंतिम आवेशन, और यह सभी घटनाएं संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। -3 minutes. अब हम उड़ान से 3 मिनट की दूरी पर हैं। प्रमोशन तथा इस प्रमोशन की घटनाक्रम को पहले ही बताया जा चुका है। सर्वप्रथम दोनों S200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर प्रज्वलित किए जाएंगे T0 पर। Pre-flight pressurization of the hydrogen tank commenced. S200 के प्रज्वलन के 108 सेकंड के पश्चात L110 जो कि -2 minutes. तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा। L110 के प्रज्वलन के पश्चात करीब 137 सेकंड पर S200 बूस्टर्स को यान से पृथक कर दिया जाएगा। We are close to 1.5 minutes from the scheduled launch time. सभी दर्शकों को ज्ञात है यह एक ऐतिहासिक मिशन होने वाला है। पूरे भारतवर्ष की आंखें इसमें हैं। इस यादगार पल के लिए यहाँ सब उपस्थित -1 minute. अब हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर -45 seconds. -50 seconds. All sequences armed. Stage ready. -45 seconds. -40 seconds. L110 VHPP open. MOV 79 open. -35 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. L110 VSPP open. -20 seconds. -15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है।
वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant, 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated of hypergolic earth storable liquid propellants UH-25 and N2O4. Now the S-200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार इस यान से S-200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अभियान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L110 stage performance normal. The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणुद उत्पन्न करता है। We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second. That is 250 kilometers every minute. L110 stage performance normal. LVM-3M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N2O4 तथा UH-25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। Stage ignition is authorized. अगला चरण C-25 का प्रज्वलन भावी है। Plus 5 minutes. L110 stage thrust cut off and separated to C-25 ignition command. 25 ignition confirmed. That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C-25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C-25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य है। 118 kilonewtons thrust in vacuum is what the stage develops with its 28.6 tons propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen.
Present Cryo altitude stage is low. performance normal. तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C-25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। इस चरण में 186 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. Plus 7 minutes. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely. Cryo stage आइए performance अब आपको normal. पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं। लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan 3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. The propulsion module provides propulsion for earthbound maneuvers, translunar injection, and moonbound orbits. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of Earth and lunar orbit. The abbreviated name of the payload is SHAPE. Among the payloads of the lander module, the following are included. A Langmuir probe called Rambha to measure the near-surface plasma density, that is the density of ions and electrons, and its changes with time. The second payload is Chandra's Surface Thermophysical Experiment or CHASTE to measure thermal properties of lunar surface near polar regions. To measure the seismicity around the landing site and delineating the structure of the lunar crust and mantle, payload ILSA is there. The rover, after its descent, will further the scientific study objectives through its own payloads. For better understanding of chemical and mineralogical composition of lunar surface, LIBS or laser-induced breakdown spectroscope is included. Another payload is the alpha particle X-ray spectrometer. जी हाँ, लैंडर मॉड्यूल में 3 पेलोड हैं, रोवर में 2 और प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1 पेलोड भेजा गया है। चंद्रयान 3 के स्वदेशी लैंडर और रोवर में नितभारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अंतर्ग्रही मिशन के लिए भी आवश्यक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। लैंडर के पास यह क्षमता है कि वह चंद्रमा की उबड़-खाबड़ सतह में भी बड़ी सावधानी से उतर सकेगा और रोवर को बाहर लाने के लिए और संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में कुल 6 नितभार हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है, यह चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व तथा समय के साथ बदलाव का मापन करेगा। इसके बाद चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज का मापन करेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र में भूकंप जैसी गतिविधियों का पता लगाएगा। रोवर में चंद्रमा की सतह के तत्वात्मक विश्लेषण के लिए लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।
एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक निर्धार है शेप स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी से परावर्तित नियर इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा। वर्तमान में C-25 इंजन कार्यरत है और पूर्णतः सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम प्रमोशन से 700 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 191 किलोमीटर। As we have told you about the Chandrayaan 3's upgrades in the aspects of enhanced robustness through extensive ground tests and simulation, during the last phase of landing, the module will have a vertical velocity of less than 1 meter per second and a horizontal velocity of less than 0.5 meters per second from a height of 3 meters. The lander legs are designed to be robust enough to thrive the impact. The cameras are tuned to take pictures ahead of the landing and enable intelligent decision making for choice of best location to land, avoiding craters and boulders on lunar surface. The successive pictures will also enable the craft to determine its horizontal and vertical velocity in real time. Laser Doppler velocity sensor is an upgrade in Chandrayaan 3 over its predecessor. It helps to determine instantaneous velocity of craft. Insights into the behavior of Chandrayaan 2 in the last few minutes of its descent has revealed to the scientists the necessity for upgrade in the guidance algorithm. Inputs from various sensors are used by the autonomous navigation guidance algorithm of Chandrayaan 3 to plan the flight path to the most suitable landing spot. The engines of Chandrayaan 3 are capable of more gradual throttling also. वर्तमान में हम प्रमोशन से 817 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। करीब 950 सेकंड पर तृतीय चरण क्रायोजेनिक इंजन को शट ऑफ कर दिया जाएगा और उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर चंद्रयान 3 को यान से पृथक कर दिया जाएगा। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 द्वारा एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में लॉन्च करने के पश्चात 170 किलोमीटर की पेरिजी पर क्रमशः 5 बार मैन्यूवरिंग कमांड दिया जाएगा। 5वीं बार में यह पृथ्वी से चंद्रमा की ओर प्रस्थान करेगा, जिसे हम ल्यूनर ट्रांसफर ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। फिर 5 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और फिर क्रमशः 5 मैन्यूवरिंग के पश्चात प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित हो जाएगा। यहाँ यह उचित समय और अभिवृद्धि में लैंडर मॉड्यूल को पृथक करेगा और 23 अक्टूबर 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। Plus 15 minutes. We have come close to 900 seconds after the launch. Currently, the C-25 stage is thrusting. Current relative velocity is 9.29 kilometers per second. जी हाँ, कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण LVM-3M4 रॉकेट का चंद्रयान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है और उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त होते ही और उचित अभिवृद्धि प्राप्त होते ही चंद्रयान 3 को अंतक्षेपित कर दिया जाएगा। Cryo stage thrust cutoff. Satellite injection condition is achieved. अभी पुष्टि की गई
चंद्रयान 3 को प्रमोशन की कक्षा प्राप्त कर ली गई है। Chandrayaan 3 satellite separated. चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर। Chandrayaan 3 has attained a major milestone LVM-3 successfully. M4 Chandrayaan 3 mission accomplished. Handing over to mission director. This is mission director. The LVM-3 M4 Chandrayaan mission accomplished its precise satellite injection conditions. LVM-3 M4 mission is successful. Jai Hind. The launch has also added a feather in the cap of LVM-3 rocket. You can watch the jubilant congratulatory gestures of ISRO scientists in the Mission Control Center. जी हाँ, चंद्रयान को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है, लेकिन चंद्रयान 3 की यात्रा अभी जारी है। अब इस मिशन के बारे में हम अध्यक्ष महोदय से सुनेंगे और हम आपसे आज्ञा लेते हैं। We sign off. नमस्कार। Up next is address by Secretary DOS, Chairman ISRO. Congratulations, India. Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometers was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. Before that, let me introduce the team behind this mission, the mission director, Mr. Mohan Kumar, and also the project director of LVM-3, and we have also the mission director for the Chandrayaan 3 craft, the project director of Chandrayaan 3, Veera Muthuvel. So over to them, Mohan. Thank you, sir. Honorable Minister of State for Science and Technology and Departments of Space and Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman ISRO and Secretary Department of Space, former secretaries of the department, invited dignitaries, respected dignitaries and invitees, I am very happy to report here that the LVM-3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan 3 satellite to the precise orbit, and once again the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. I would like to appraise three things here. The vehicle systems are in the continuous process of quality improvement, especially in the event of our human rating efforts towards making the systems reliable. Secondly, the payload also, capability of the payload also is improved by mission strategies as well as vehicle engineering approaches. We are in the process of increasing the launch frequency of this vehicle considering the national requirements as well as satellite demands. Here, so many improvements we have incorporated in this vehicle. For example, the S200 nozzle, they are processed exactly as per the human rating standards, enabling us to have 100% NDT, and the inherent pocket erosion characteristics are removed. The L100 stage Vikas engine, mostly it is 100% qualified to be the human rated engine with indigenously developed LET throats, and the back wall gas entry also is eliminated, and it is a perfect system.
And CE20 stage also is perfectly, actually, sir. Good. So we will describe all those details later because of shortage of time. Yes, sir. I take this opportunity to thank all the mission executives because mission executives for all the supports all along the launch campaign process as well as the launch. Once the launch manifest is released and mission executives are identified, really this is a penance of so many across the ISRO centers, our launch vehicle centers, VSSC, LPSC, IPRC, IASU, SDSC, SHAR, URSC and SAC, along with all our industrial partners, major players to the small-scale industries who supply us with all the deliverables in time, quality products, the suppliers of chemicals, propellant ingredients, suppliers of avionics systems, and our own GOCO facility operators. Actually, the industrial manpower is really our ISRO's virtual manpower. Everybody's efforts went into this, and also the prayers and best wishes of all our seniors, retired executives, everyone's prayers and our own family members. I take this opportunity to pray God Almighty for all the blessings in the form of this success, which was the penance by the ISRO family for last 73 days. And my prayerful pranams for the successful continuous operations of the Chandrayaan spacecraft, for its safe and soft landing on lunar surface and further experiments. Thank you. Jai Hind. Respected Chairman ISRO, Center Directors, dignitaries and my team Chandrayaan 3, very happy to note that our Chandrayaan 3 has been injected into an intended orbit with very close orbital parameters. Congratulations and thanks to LVM3 team. And all our spacecraft health parameters are normal, including the power generations in both propulsion module and lander module. Our journey to moon has begun now for the most awaited soft landing. We'll be closely monitoring and controlling the spacecraft from ISRAC Bangalore. Many critical events are lined up, starting from earthbound maneuvers, insertion into the lunar orbit, and separation of lander, and set of deboost maneuvers, and finally the power descent phase for a soft landing. I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Director URSC, and all the center directors for entrusting me this opportunity, who have been the motivational and guidance force behind this mission. My special thanks to Chandrayaan 3 project executives, Associate Project Director Kalpana, Deputy Project Directors, Project Managers across the ISRO centers who have provided an excellent support in building the spacecraft. My special thanks to the expert committees for their constant guidance throughout the various stages of the project. I also thank the various work centers and industries who have contributed directly and indirectly to this mission. My special thanks to URSC council members, group directors, deputy directors across the ISRO centers, and looking forward for the soft landing with all your wishes and blessings from the God. Thank you. We have our Honorable Minister for Space, Minister of State for Space, Dr. Jitendra Singh ji, amongst us during this historic occasion of success of launching of LVM3. So we would like to hear a few words from him. Over to you, sir. It is indeed a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud. And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. You would recall, Honorable Prime Minister had very recently said, sky is not the limit. And living by his words,
I think the Chandrayaan today has gone beyond the limits of sky to discover the unexplored horizons of the universe beyond. Ladies and gentlemen, this day today, the 14th of July 2023, is also a day of vindication. Vindication of the dream that Vikram Sarabhai saw 6 decades ago. He might have been short of resources, but never short of confidence. And when we see those pictures of a launcher vehicle being carried on the carriage of a bicycle, without any remorse, without any slightest embarrassment, that is because Vikram and his team had faith in themselves, faith in India's potential, faith in India's acumen. And today, here, we are vindicating and we are reiterating India's indigenous capabilities, living up to the ideal of Atmanirbhar Bharat. And before I conclude, ladies and gentlemen, as Mother India enters into the next 25 years of this Amrit Kal, she pledges to play a leading global role in the emerging world scenario of 21st century. Thank you and congratulations once again. Thank you, sir. We will also introduce the directors of the centers who have done all those great work of building the rocket, building the scientific instruments for Chandrayaan-3, the Chandrayaan spacecraft itself, and made all those critical systems, and also the agencies who are going to handle the rest of the mission part, the tracking and the ground stations, and all those teams are here. So I request the directors of those centers to join. First, Director of Vikram Sarabhai Space Center. Good afternoon, India. In last 1 year, this is the 10th mission, including the precise landing of the reusable launch vehicle. So with this mission, this is the 7th mission of LVM-3, the successful mission. With this, the success rate of LVM-3 is 100%. And this is the ideal vehicle for Gaganyaan. Some of the changes that we are incorporating in Gaganyaan, we have implemented here. And the Mark III has crossed the reliability of 0.9 and inching forward. So I take this opportunity to salute the entire ISRO community, especially the VSC community and all launch vehicle centers, industry partners for making the stages, making the sub-assemblies and testing. In fact, this is the 3rd launch of LVM-3 in 1 year. You know, the realizing the stages, assembling, testing, and then launching 3 LVM-3s in 1 year is a Herculean task. I salute the industry as well as all the ISRO centers for this. And I wish all the very best. We know that when the beginning is good, the ending has to be good. I wish all the very best to the Chandrayaan for its solitary journey through the vastness of space and for making a feather-like soft landing in the 4th week of August. Good luck. Thank you. Dr. Narayanan, Director LPSC. Good afternoon to all of you. It is a historical event for Indian space program and a proud moment for all the Indians across the globe on this momentous occasion of the successful launch of the Chandrayaan-3. 3-in-1 spacecraft in the required orbit with the highest level of precision by our heaviest launch vehicle, LVM-3. After the 2 launches of LVM-3 vehicle this year, this vehicle is realized in the record shortest time. Today, once again, all the vehicle systems have performed, demonstrated the 7th successful launch. As you all know, the entire spacecraft community has put wholehearted effort during last 4 years, and we have realized a marvelous, great scientific satellite. For this mission, the entire vehicle performance is as expected,
as predicted. In fact, the precision in which the satellite is launched shows the reliability of this vehicle. And we too have 4 liquid propulsion modules, 2 in the launch vehicle. The L110 stage, C25 stage, it has performed extremely well along with all other vehicle systems. We too have 2 more propulsion modules, one for taking the spacecraft to the moon, another one for soft landing. I think it is already well integrated, the system health is very good. Today's success is the culmination of the dedicated, smart and hard work of all the ISRO team members and the work culture of ISRO and the review process what we follow. I am sure all further mission operations will be a grand success and we'll have the successful soft landing. On this occasion, let me congratulate and compliment the members of ISRO team, our family members who have really sacrificed, the partners from industry and academia, and the various review fora. Thank you. Jai Hind. The Chandrayaan craft was built at the URO Satellite Center, so I request the Director of URC to speak. Good afternoon, ladies and gentlemen. I take this opportunity to first thank my colleagues from the Launch Vehicle Center for providing a textbook-like launch for Chandrayaan 3 on its journey towards moon. Thank you very much. And as Director LPSC and Director VSSC mentioned, realizing this kind of launch vehicle, third launch vehicle within a year's time is indeed a Herculean task. And thank you very much for the effort that has been put by all the members of the launch vehicle community and the industry supporting them. Coming to Chandrayaan 3, Mohan was telling that it is a penance. In fact, it is a penance of the Chandrayaan 3 team for the last 4 years, which has come today as an outcome. It is sitting like a brain sitting inside the head of a human being on that mighty vehicle. On top of that, that satellite was sitting, and it was such a happy moment to see that satellite getting separated. And our work continues from now for the next 42 days till we reach the lunar orbit and touchdown softly on moon. So we'll speak the rest of the things after the soft landing on top of moon. Till then, thank you very much for all the members of the satellite community and the industry for your support, which has been continuing over several years, and I am sure will continue in future also. Thank you very much. Space Application Center Ahmedabad plays very important role in our scientific instruments and building of the satellites. Over to Director SAC, Nilesh Desai. Thank you. Good afternoon, everybody. At the outset, let me compliment Team ISRO for this excellent work, and especially vehicle team as well as the project team. And as we begin this historic journey towards moon, well begun is half done, as it is said. So I'm sure that we'll succeed in our effort and endeavor to land on moon safe and in secured manner with a soft landing after 45 days. So I wish all the best to all the people who have contributed directly or indirectly, and especially to the project team, spacecraft team, as well as my team at Space Application Center, who has developed sensors and other hazard detection and avoidance system, which will help for a secured and safe landing on moon. So once again, I thank all who have contributed in this mission. Thank you. Director of this center, Satish Dhawan Space Center, is the chairman of the Launch Authorization Board and also realizing the solid motors of this rocket. So over to Director SDSC Shar Rajarajan. Honorable Minister of Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman, our mentors and the dignitaries present here, and the entire ISRO family, a very successful launch, and hearty congratulations to all the LVM-3, M4 and Chandrayaan 3 mission. So once again, the fat boy has done its job and put a very precisely our prestigious lunar mission Chandrayaan 3 in the transfer orbit. And I congratulate the SDSC SHAR team, because throughout this launch,
we had many launch campaigns of 355 and 56. Along with that, we are proud to have this. In spite of the weather conditions here, we have successfully launched LVM-3 in the prescribed launch window time between July 12th and 19th. And we had a very good, smooth campaign here. And all the hearty congratulations to the entire launch vehicle team, as well as for the last 2 months for hosting the Chandrayaan-3 team here and carrying out all the tests to make sure that Chandrayaan-3 is also ready for the mission. And I also thank our entire logistics team who handled this huge crowd throughout this campaign period, in particular last 2-3 days. And my sincere thanks to the various Indian industries who are now participating in various aspects of solid motor processing as well as the assembly activities of our launch vehicle to make it successful. And I wish a glorious success in the future to come. And I wish, as mentioned in the last week of August, to have a successful soft landing of Chandrayaan-3 lander on the moon surface and to make history. Once again, thank you. Jai Hind. I request all center directors to join on the podium. Please come, all of you. Can you lower this? Please come. Please come here. Come. Please come. नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं इसरो के एक और प्रमोशन मिशन के सीधे प्रसारण में। मैं विकास स्वर्णकार अपने साथी कमेंटेटर मिस माधुरी पी के साथ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शाह श्रीहरिकोटा से प्रमोशन का आंखों देखा हाल आप तक लाने के लिए हम श्रीहरिकोटा से के मिशन नियंत्रण कक्ष से इस प्रमोशन से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक उपलब्ध करा रहे हैं। यह मिशन जिसका नाम है GSLV F12 NVS-1 मिशन, इसमें GSLV F12 रॉकेट का प्रमोशन आज 29 मई 2023 को भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 10:42 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वितीय प्रमोशन मंच से किया जा रहा है। Namaskar and good morning to the viewers. You are watching the launch event of GSLV
F12 NVS-01 mission, live on Doordarshan National. I am Madhuri giving the commentary in English for the launch event. With me is my co-commentator Shri Vikas Swarnkar giving commentary in Hindi. The launch of GSLV F12 NVS-01 is scheduled to take place today, the 29th of May 2023 at 10:42 hours Indian Standard Time from the second launch pad at Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota, the spaceport of India. Apart from DD National, the live streaming is also available on ISRO website, YouTube and Twitter. CDP Roger. Control noted. What area can switch on the radiation? Today's launch will be the fourth launch of ISRO this year. Now may I ask the curtain raiser for this video, for this launch mission to be played. FCC to control event number 4. GSLV F12 is the 15th flight of India's geosynchronous satellite launch vehicle GSLV and the 9th flight with indigenous cryo stage. This is the 6th operational flight of GSLV with indigenous cryogenic stage. The Indian Regional Navigation Satellite System, IRNSS, with an operational name of NAVIC, stands for Navigation with Indian Constellation. It provides accurate real-time positioning and timing services over India and the region extending approximately 1500 kilometers around the Indian mainland. The variety of services offered by NAVIC aid in different applications like vehicle tracking and fleet management, location-based services integrated into mobile phones, terrestrial navigation aid for travelers, time dissemination, and more, including services to our strategic users. NAVIC consists of 3 segments: space, ground, and user. The space segment consists of base layer constellation of 7 satellites in GEO and GSO plane. NVS-1 satellite is the first of the second generation navigation satellite series. NVS-1 is based on the standard I-2K bus structure and has a mass of more than 2,200 kilograms. NVS-1 satellite has a navigation payload working in L1, L5 and S frequency bands. As compared to the first generation satellite series, the second generation satellite series includes L1 navigation band and incorporates indigenously developed rubidium atomic clock. The inclusion of L1 navigation band improves the position, navigation and timing services for civilian users and also facilitates interoperability with other GNSS services. The NVS-1 satellite is designed for a mission life of about 12 years. Minus 25 minutes. The GSLV Request F12 all will stations place the change over to NVS-1 channel 2 satellite at into a T-24 geosynchronous minutes. transfer orbit. No confirmation It will is be needed to launched control. from the second launch pad of Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota, the spaceport of India. We flew over the clouds and into the sunrise. Then Nanny took us into the future. Do you believe it? कुछ लोग बचपन में अपने हाथों से गलत काम कर बैठते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने कोई गुनाह कर दिया हो।
लोग ना जाने इसे क्यों इतना बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि जैसे कोई लाइलाज बीमारी लग गई हो जो कभी ठीक ही नहीं हो सकती, और उसके लिए हजारों लाखों रुपए के महंगे महंगे इलाज बताते हैं। मैं कहता हूं दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका के समाधान ना हो। बस थोड़ी सी समझदारी और आयुर्वेदिक इलाज से इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। जरूरत है तो सही सलाह की। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा में बचपन की गलतियों की वजह से आई हुई जवानी की सभी समस्याओं के लिए सिर्फ 999 रुपए महीने में इलाज किया जाता है, ताकि कोई भी नौजवान गुमराह ना हो और वो इन सभी समस्याओं से मुक्त होकर अपने वैवाहिक जीवन का पूरा आनंद उठा सके। अधिक जानकारी के लिए आप हमें 011-45454545 पर फोन करके मुफ्त सलाह भी ले सकते हैं। अभी अभी आपने एक संक्षिप्त कट एंड रेजर वीडियो देखा इस मिशन से जुड़ा हुआ। इस मिशन में मुख्य उपग्रह के रूप में NVS-1 नामक नौवहन उपग्रह है, जिसे निर्धारित 170 किलोमीटर की पेरिजी तथा 36,744 किलोमीटर की एपोजी वाली भूतुल्य स्थानांतरण कक्षा में 19.36 डिग्री के झुकाव के साथ प्रक्षेपित किया जाना है। NVS-1 उपग्रह, जो कि नेविगेशन सैटेलाइट की श्रेणी में द्वितीय पीढ़ी का उन्नत उपग्रह है, यह नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन नाविक द्वारा प्राप्त सुविधाओं में बढ़ोतरी कर देश में नेविगेशन जैसी सुविधाओं को और उन्नत बनाकर भारत का इस दिशा में स्वदेशीकरण की ओर एक और कदम है। COT to TCTC, all radar signals are normal. TCTC copied. Control to note, even number 481 and 482 completed. बहुत से छात्रगण यहाँ पर आंखों देखा अनुभव लेने आए हैं। यह बहुत ही रोमांचक अनुभव होता है जब रॉकेट का प्रक्षेपण हम देखते हैं। We are 23 minutes from the launch. The GSLV F-12 NVS-01 mission intends to place the NVS-01, a navigation satellite weighing 2,232 kgs, into an orbit with perigee at 170 kilometers and an apogee of 36,744 kilometers with 19.36 degrees inclination. It is going to be an eastward mission for a geostationary satellite. Today's launch will be the fourth launch of ISRO this year, while the second launch pad is playing host for second time in 2023. This is 15th launch of GSLV, which flew its first ever mission in 2001. Present launch is 9th flight with indigenous cryo stage, of which 3 were developmental and this one, 6th, is the operational flight. इस वर्ष का यह चौथा प्रमोशन मिशन है। SSLV D2 से सफल शुरुआत करते हुए LVM-3 OneWeb India 2 मिशन, फिर PSLV C-55 Telios 2 मिशन हमने देखा और आज GSLV F-12 NVS-1 हम देखने जा रहे हैं। यह GSLV Mark II श्रेणी में इसरो की चतुर्थ पीढ़ी का रॉकेट है। यह इस श्रेणी में इसकी 15वीं प्रमोशन होगा। ROD, Roger. COI to ROD, all EA systems are ready for launch. GSLV F-12 के साथ स्वदेशी क्रायो इंजन भी संलग्न है और यह उसकी 9वीं उड़ान होगी। ROD, Roger. RSO to ROD, range safety systems are ready for This year, ISRO has conducted the launch of SSLV D2 EOS-07 mission from the first launch pad in the month of February. In March, LVM-3 M3 OneWeb India 2 mission was held from the second launch pad. PSLV C-55 Telios 2 mission successfully lifted off in April from the first launch pad, and here we are, all set for the GSLV F-12 NVS-01 mission from the second launch pad.
अब हम प्रमोशन से 20 मिनट 23 सेकंड की दूरी पर हैं। ROD to mission director, range is ready for GSLV F12 NVS-01 mission. Mission Director Roger. TTC Director to Mission Director. TTC Director confirms readiness of ISRO stations and network for supporting GSLV F12 NVS-01 mission. Mission Director Roger. Minus 20 minutes. Control event number 506 completed. GSLV F12 NVS-1 मिशन के प्रमोशन की उल्टी गिनती 27.5 घंटे पूर्व शुरू हो चुकी है। इस दौरान यान को पावर ऑन किया गया है। सभी तंत्रों तथा प्रणालियों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। L40 स्टेज तथा GS2 स्टेज जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, उन पे भराव की स्थिति प्राप्त कर भराव पूर्ण कर लिया गया है। ऐसा ही क्रायो स्टेज के लिए भी स्वास्थ्य जांच पूर्ण की जा चुकी है तथा लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन का भराव सुनिश्चित किया जा चुका है। सभी सहायक तथा सुरक्षा तंत्र अपेक्षानुकूल प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही उपग्रह को भी पावर ऑन कर स्वास्थ्य जांच तथा बैटरी आवेशन किया जा रहा है। सभी प्रणोदक टंकियों पर उचित दबाव सुनिश्चित किया जा चुका है। रियल टाइम प्रोग्राम को भी ऑन बोर्ड कंप्यूटर पर लोड कर दिया गया है। Has cleared to go ahead with the countdown and launch operations of GSLV F12 NVS-01 mission. Based on the readiness of the GSLV F12 launch vehicle, NVS-01 spacecraft, range systems, TTC network, and considering the favorable weather conditions, Mission Director authorizes commencement of the launch operation sequence for GSLV F12 NVS-01 mission for launch at 10:42 hours IST today, that is 29th May 2023. All stations to note, Mission Director has given authorization for launch. पहेलियां बुझा रहा है कोई, मस्तियां लुटा रहा है कोई। शरारतें शरारतें हल्की सी शरारतें। Valve authorized for H tank and O tank. The countdown for the launch has been 27.5 hours long, that had started at 7:42 in the morning on Sunday. During the countdown, the launch vehicle systems, liquid propellant storage and servicing systems at the launch complex, and the range instrument Data loggers are on at Shot 2 station. carry out final preparation activities leading to the launch. And you have a little while ago watched the mission director Shri N.P. Giri authorizing the start of automatic launch sequence. It is basically a capsule of very critical functions of the launch vehicle stages and satellites, run and monitored by ground-based computers. If all the parameters are found acceptable, the onboard computer takes over and very soon thereafter the actual launch takes place. Minus 17 minutes. सभी वैज्ञानिक अभियंतागण अपने कार्य कुशलतापूर्वक पूर्ण करके इस मिशन के लिए आतुरता से इंतजार कर रहे हैं। कुछ अंतिम गतिविधियां तथा जांच बाकी हैं। अभी अभी हमने देखा मिशन डायरेक्टर ने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का अनुमोदन दे दिया है। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने के पश्चात पूर्ण नियंत्रण ऑनबोर्ड कंप्यूटर के पास चला जाता है। रॉकेट के पास खुद का ऑनबोर्ड कंप्यूटर है, वह पूरे जांच Minus 16 minutes. पूर्ण रूप से सुनिश्चित करता है और तत्पश्चात कोर स्टेज के प्रज्वलन का कमांड देगा।
ALSC Roger. GS servers activated. MC confirms data from SHAR-1 and SHAR-2. Automatic launch sequence initiated for GSLV F12 launch. ALS in auto mode. आप सभी दर्शकों के लिए अब प्रस्तुत है इस लॉन्च व्हीकल GSLV Mark II GSLV F12 का संक्षिप्त इंटीग्रेशन वीडियो। minus 15 minutes. Request CGSS to confirm. प्रथम चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका यह नोजल एंड सेगमेंट कोर बेस श्राउड के साथ यहाँ SVAB सेकेंडरी व्हीकल असेंबली बिल्डिंग पर लाया गया है। तत्पश्चात ऊपर की ओर मिडिल सेगमेंट बहुत ही सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक, धैर्य पूर्वक ये कार्य किया जाता है। इसमें कोई भी त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं होती है। कोर स्टेज में 3 मिडिल सेगमेंट्स होते हैं तथा अंत में ऊपर की ओर यह हेड एंड सेगमेंट लगाया जा रहा है। यह पूरा कार्य SSAB बिल्डिंग पर किया जा रहा है। अब ये देख रहे हैं आप इग्नाइटर। यह इंटर स्टेज है जिसे अब समायोजित कर दिया गया है प्रथम चरण पर। अब आप देख रहे हैं यह L40 स्टेज है जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन लगा हुआ है। UH-25 तथा N2O4 पर आधारित यह चरण। ऐसे 4 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स कोर बूस्टर S139 के साथ में संलग्न किए जा रहे हैं। इस जुलाई आ गए हैं 3 जबरदस्त इंटरनेशनल शोज। तुम्हें ये कैसे पता चला? देखिए कॉलेज रोमांस। हम बनेंगे डार्कनेस में लाइट ऑफ होप। कहानी दिल के डॉक्टर्स की। हमें जो भी कुछ चाहिए इस ऑपरेशन के बाद मिल जाएगा। चलो फिर शुरू करते हैं। और कुछ अमेजिंग डिटेक्टिव्स। हाँ भाई, कैसे लगी परफॉर्मेंस? तुम्हें अंदाजा भी है आगे क्या होगा? वेट एंड वॉच। और ये सब Amazon मिनी टीवी पर, जो कि है आपके Amazon शॉपिंग ऐप के अंदर बिल्कुल फ्री। अब यह प्रथम चरण पूर्णतः तैयार हो चुका है तथा इसे SSAB बिल्डिंग से निकालकर VAB तक लाया गया। The second stage, GL40HT, having prepared in a separate facility, is being moved to the vehicle assembly building for integration about the first stage. That is the cryogenic upper stage. Entering into the vehicle assembly building, carefully being tilted and being integrated above the second stage. The equipment bay for the compatibility checks, and there are the visuals from the clean room for the satellite preparation. Minus 12 minutes. This is a concept of encapsulated assembly where the satellite is being ensconced into the heat shield house into the clean room facility, which is a separate facility, and then as an integral unit it will be moved to the vehicle assembly building
and then integrated to the launch vehicle. Completed. This is a 4-meter diameter ogive payload fairing, and this is the second time a similar payload fairing and a similar design is going to fly. उपग्रह को ऊष्मा कवच के अंदर सुरक्षित कर दिया गया है और अब पूर्णतः तैयार GSLV F-12 को व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से umbilical टावर लाया जा रहा है. The second launch pad is based on the concept of integrate, transfer, launch. जी हाँ, यह नज़ारा GSLV F-12 का है जो कि पूर्णतः तैयार है अपने मिशन को पूरा करने के लिए. यह द्वितीय प्रमोचन मंच है. Views from the Mission Control Center on your screens now. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है तथा अंतिम जांच के पश्चात प्रज्वलन का कमांड इशू किया जाएगा. अब हम प्रज्वलन से 10 मिनट 13 सेकंड की दूरी पर हैं. -10 minutes. Health of cryom-hydraulic system is normal and cyclic charging is in progress. GS2 redundant chain actuation. अभी आपने इंटीग्रेशन वीडियो देखा, हम उसको और थोड़ा वर्णन करते हैं. GSLV F-12 एक त्रिचरणीय यान है. प्रथम चरण में ठोस नोदक वाला S-139 बूस्टर के साथ 4 L-40 जो कि तरल नोदक पर आधारित स्ट्रेपॉन्स हैं, वह संयुक्त रूप से GSLV के प्रथम चरण कहलाते हैं. कोर बूस्टर लगभग 4800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है. वहीं 4 L-40 स्ट्रेपॉन बूस्टर्स विकास इंजन के साथ 2720 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करते हैं. L-40 के विकास इंजन में इलेक्ट्रोडायनामिक एक्चुएटर्स लगे होते हैं जिससे यान को पिच, याव तथा रोल नियंत्रण प्रदान किया जाता है. द्वितीय चरण में फिर से तरल नोदक पर आधारित चरण है. GS2 prime chain actuation in progress. UH-25 तथा N2O4 ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं. यह दाब भारित उच्च प्रणोद वाले विकास इंजन लगभग 846 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करते हैं. इसमें भी इंजन जिम्बल के लिए इलेक्ट्रोडायनामिक एक्चुएटर्स लगे हुए हैं. इस चरण को GL-40HT भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हाई थ्रस्ट विकास इंजन्स लगे हुए हैं. इस चरण का प्रज्वलन काल 141 सेकंड का होता है. ऊपर की ओर चलते हुए तृतीय चरण जो कि क्रायो इंजन से संयुक्त है. क्रायो इंजन पूर्णतः स्वदेशी क्रायो इंजन लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर द्वारा VSSC तथा IPRC के सहयोग से विकसित किया गया है. वर्तमान में GSLV में क्रायो इंजन के उन्नत वर्जन C-15 का इस्तेमाल किया जा रहा है. इस चरण में लिक्विड ऑक्सीजन तथा लिक्विड हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है और इसमें कुल 74 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है. इस चरण का कार्यकाल लगभग 841 सेकंड का होता है. यही वह अंतिम चरण है जो उपग्रह को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जाता है तथा अंतक्षेपित करता है. बहुत से गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं. On your TV screens, the dignitaries getting ready for witnessing the launch event of GSLV F-12 NVS-01 mission. Ahead of the launch, let me inform the viewers the flight events that are going to take place during the mission. The total duration of mission is about 18 minutes. The L-40 ignition takes place
4.8 seconds ahead of T0. After ascertaining the health of L40 strap-on engines, the ignition of core S139 motor takes place. The S139 stage, based on HTPB-based solid propellant, burns for 110 seconds and burns out at an altitude of 41 kilometers. In the meantime, the rocket gains a relative velocity of 1.5 kilometers per second. The four strap-ons, called the L40, operating on Earth-storable liquid propellant-based Vikas engine, burn for about 150 seconds. The ignition of second stage, called the GS2, takes place soon after the shut-off of L40s. The separation of GS1 takes place 2 seconds after the ignition of GS2. This is called hot separation, in which the upper stage exhaust imparts thrust over the spent lower stage to ensure impact-free separation event. By now, the rocket will be at 75 kilometers altitude. The closed-loop guidance is initiated, indicating that the rocket no longer needs to steer itself for a better journey through the atmosphere. 237 seconds past the launch time, the heat shield separation takes place when the rocket is at an altitude of 115 kilometers. By the time the second stage completes its operation of 142 seconds, the rocket gains a relative velocity of 4.7 kilometers per second. The second stage, GS2, is separated few seconds later. Cryogenic upper stage, CUS-15, is the third stage based on liquid hydrogen and liquid oxygen stored at cryogenic temperatures as propellants. This stage operates for 13.5 minutes and increases the relative velocity of the rocket from 4.7 kilometers per second to 9.7 kilometers per second. The satellite NVS-01 is injected at an altitude of 251.5 kilometers with a relative velocity of 9.7 kilometers per second. Let me remind the viewers that the geosynchronous transfer orbit of NVS-01 has a perigee of 170 kilometers, which is how far the satellite will be at a point nearest to the Earth, and apogee, or the farthest point from Earth, of 36,744 kilometers nominally. Thrust burns of the satellite will then take it to the geostationary orbit. Pyro and wall battery on. Onboard अब computer हम in प्रमोचन flight के पास आ चुके हैं. अब प्रमोचन 3 मिनट 24 सेकंड की दूरी पर है. Fruitnik Electro Plus. Rehydrate, feel alive. फ्रूटनिक इलेक्ट्रो प्लस रीहाइड्रेट R3 फॉर्मूला इलेक्ट्रोलाइट रिस्टोर करे, ग्लाइकोजन रिप्लेनिश करे और मसल्स का तनाव कम करे तुरंत एनर्जी के साथ. Fruitnik Electro Plus. Rehydrate. इस मिशन के मुख्य उपग्रह NVS-1, जिसका कुल भार 2232 kg है, और इस श्रेणी में यह L5 तथा S बैंड के अलावा L1 फ्रीक्वेंसी बैंड का उपयोग अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए कर रहा है. इस उपग्रह में सबसे महत्वपूर्ण पेलोड है रुबिडियम परमाणविक आवृत्ति मानक घड़ी. परमाणविक घड़ी एक स्थिर आवृत्ति मानक प्रदान करता है जो कि सभी नेविगेशन पेलोड के लिए एक निर्देश का काम करेगा. NVS-1 उपग्रह यह प्रयोग कर अपनी परिशुद्ध नौवहन सुविधाएं को उन्नत बनाते हुए भारत के विकास के लिए समर्पित है. We are about 2.5 minutes from the launch time. The network of ISRO telemetry tracking and command network stations view the launch vehicle along its trajectory. The trajectory parameters and separation events are ascertained through these stations. For the present mission, Shah, Port Blair, Brunei and Beak stations are participating. -2 minutes.
सभी दर्शक दीर्घा बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हुए प्रमोशन का। मौसम प्रमोशन के लिए पूरी तरह अनुकूल है। Bright sunny morning here at Sriharikota. सर्वप्रथम हम देखेंगे T-4.8 सेकेंड्स पर चारों L40 इंजन्स का इग्निशन। तत्पश्चात T0 पर कोर बूस्टर का प्रज्वलन होगा और उसके बाद यान का उत्थापन। There's a little over 1 minute from the launch. O tank ready. Minus 1 minute. All subs armed. Minus 55 seconds. L40 VHPP opened. Minus 50 seconds. Battle ready. All sequencers armed. Minus 45 seconds. Tank ready. Cryostats ready. Minus 40 seconds. 40 seconds to go. Stand by for the launch. Minus 35 seconds. Minus 30 seconds. L40 VSPP opened. Minus 25 seconds. DS2 VSPP opened. Minus 20 seconds. Minus 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन GSLV F12 का। P3 tracking. P2 tracking. चारों L40s तथा कोर बूस्टर S139 अपना सामान्य निष्पादन करते हुए उद्देश्य कक्षा की ओर अग्रसर। Performance normal. Nominal launch of the GSLV F12 mission. The rocket flying by spewing fire into the clear sky of Sriharikota. GS1 and L40s together thrusting currently. The Shah ground station is currently tracking. Shah 1 main auto. Plus Shah 2 is in main auto. वर्तमान में प्रथम चरण प्रज्वलित है। इसका कार्यकाल लगभग 110 सेकंड का होगा। इसमें 4800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है। P2 change over to SCBT2. The core 139 motor will continue to burn for 110 seconds, while the L40s continue to burn First for a stage total of performance 150 normal. seconds. Thrust developed by the GS1 S139 motor is 4815 kilonewtons, while each of the L40s develops 762.5 kilonewtons. Stage ban out. प्रथम चरण को कट ऑफ कर दिया गया है। Plus 2 L40 अभी भी प्रज्वलित हैं। This is a confirmation for the S139 burnout. L40s still developing thrust. कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे द्वितीय चरण का प्रज्वलन तथा प्रथम चरण का पृथक्कन। Current altitude is 67 kilometers. 40 stages thrust cut off. Stage separated. Second stage ignited. जी हाँ, द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है जैसा निर्धारित था और प्रथम चरण को यान से पृथक कर दिया गया है। The second stage has ignited and the first stage has been separated from the ongoing launch vehicle. Currently, Shah station is tracking. Plus 3 minutes.
जी हाँ, यान